Start. So may I start? Yes. Everybody mute, only Zoha. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عليكم سر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ورتل القرآن ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Well, Sahla, you also say it. Sir, please can I say to start today? ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ورتل القرآن ترتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم Walaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Now, everybody will put your hands down. Sure. Now, no talks. Okay. Share the screen. I'm watching you, all of you guys. Okay. So don't think I'm not watching you. Like Zoom user. Who is this Zoom user? Why is your camera off? That's Imran Noor. Zoom user. How you know it? I just can see his Zach, know it. Okay. I see his Hamna Imtiaz, Mariam, and Hawez Nazgi. Why I have to tell you to open camera? Sir, I am parent, sorry. Hamna? Okay. Yes. No problem. What about Mariam and how is Nazgi? How is Nazgi and Hamna Imtiaz? Why are your camera off? Why is your camera off? Can you tell me? Yes, camera should be on. Okay. Hamna Imtiaz. Last call for you before I remove. Assalamu alaikum, sir. I am Pakiza, Hamna Imtiaz's mother. So please. Assalamu alaikum Okay, sir. okay. हमने जस्ट अच्छा सॉरी मैंने उसका बोला था ये ना ये how is Nazgi actually I'm saying how is Nazgi why is your camera off okay I will give me a Sir, I'm second on. how is Nazgi your camera is off Sir, then I have some problem with keep it this. off and keep it on again keep it off and keep it Sir, on it's on. keep it off and Sir, then it's keep it on. on first keep it off and then keep it on again Okay. sometimes Sir, is it fine now? no yours is not coming okay let's see okay be active I will ask questions okay shall we start then do you have can you see the screen Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, okay sir. Yes sir. now look there is a one more part I have added in my book about the ta'uz and tasmiyah but I will skip it here because I want those students who are really sharp to read it it's about the science behind the things the what the science says because there are some hormones which are released in our body which are called happy hormones like there is serotonin there's dopamine oxytocin and endorphins and then there are other hormones which are about the angry hormones so I will not talk about these things. These things, like cortisol, there is norepinephrine is there. There is adrenaline rush, and there are many hormones which make you sad. And there's a science behind it. Why taus, why calmness, actually make you happy because you get the happy hormones inside. And the students who are really bright,
who want to read, I will give this, PDF form of this book. You can read yourself, and it will be about the discretion, because I'm not seeing many students here who even not doing the work, or even doing, shabby work. So I'm not seeing them as a bright student. Okay, so this won't be good for them to read so much. So like maybe Tahleel will read this, and the students like her. Malika is there, she will read. Zan is there, he will read, and all that. Who want to read this and understand the science behind happiness. Okay, but today we go to the next chapter. That is our introduction to the science of Tajweed. Now you will all keep quiet, listen carefully, because this is the beginning of our lesson and we need to understand each and everything in it. So the science, when you say Tajweed, it is a science. It's not just simple thing. It is a science. Okay. It gives, this chapter actually give you the foundation of Tajweed. Okay. So after learning this Tajweed, we should understand the learning objectives. So you need to, after learning this Tajweed, you have to answer these questions, like what Tajweed means, why Tajweed is important, and why Tajweed protects the meaning of Allah's word, and so on. These questions you have to answer after we read this chapter. Okay. So Tajweed is not about reading more, it's about reading right. So Tajweed is not that you want to read more or something. It is about whatever you read and you read it right. Okay, maybe I will put up just one page so that it will be view. Can I see one page, single page, so that I can zoom it? Okay. Now I will ask someone. Maybe I ask Adila again. Adila today. What is Tajweed? Read it. Yeah. Tajweed means reading the Quran beautifully, correctly, and with care. Sir, Care I am that also. Rest of you be quiet. Keep your mic closed. Mute. I said, no, everybody mute. Only I asked this girl, Adila, she will read. Rest, mute. Okay. the exact way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Recited it. recited it. Think of Tajweed like riding a bicycle smoothly, not मत लिखो आप, लिखने sh- की जरूरत नहीं है. shakily. Playing a game with rules, not randomly. Speaking with good manners, Not shouting shouting or or mumbling. Okay. mumbling. Just like Every game has every rules. game has rules. The Quran also has rules of reciting. Recitation. These rules Stop, help stop. us. Okay, stop. The Quran also has rules of recitation. Recitation means reciting, पढ़ना. Okay. So tajweed जो है उसका मतलब है reading the Quran beautifully. आप खूबसूरती के साथ कुरान को पढ़ो. It is a tajweed. It is, we have derived it from a word called jawwada. We may see that later, soon. So we have to read it not only beautifully but correctly and with care. So that is why we have read about the verse in a Quran, Warattilil Qur'ana Tartila. So, like you are riding a bicycle, you don't want to ride it shakily. You are playing a game, you play it with rules, not randomly. You play game, there are some rules. You play carom board, you cannot play anything. पीछे से point लिया, यहाँ से लिया. You can't do that. You have every game as a rule. So, like you are speaking, you speak with the good manners. You are not shouting, you are not mumbling. Just like every game has rules, Quran also has rules of recitation. The Quran also has what? Rules of. Rules of recitation. These rules help us say each Arabic letter from its correct place. The first thing is to read each letter from its correct place. Second, avoid mistakes that change the meaning. Recite with respect, calmness, and beauty.
We will come to this when we understand firstly why Tajweed is important. Okay. Let me zoom out first. Okay, why Tajweed is important? I will say it to the admit. How is Nazki? Sorry. I'm asking this one to Hamna and Adila. Hamna and Adila. Read the why is Tajweed important. Read quickly. We don't have time. Can you see? Where is this girl? I don't know why she gone. No. I will ask, I will choose myself someone. You don't need to raise hands or something. Let the Mariam. Mariam, open up your mic. Mariam. Yes. Yes. Can you see the screen? Can you see it now? Yeah. Say it. Why Yes, is sir. Tajweed important? Read it. Tajweed, why Tajweed is? Read. Can you see the screen? No, sir. Screen is there. You should be able to see it. Malika, can you see the screen? Yes, sir. Read it. Why is Tajweed important? Tajweed protects meaning. Arabic is very precise. Changing just one sound can change the whole meaning. Remember this. This is the first thing. Understand this thing. Tajweed protects meaning. Why? Because even a single word, if a single word changes, it changes the whole meaning. And it is so, it's so important we understand it. Like, for example, if you look at here, okay, let me see if the Zach can read this. Ahmed, what is it? Qaf, lam, ba. Qalab. Qalab. And what is this? Qalab. This is what you call in Urdu kif, or you also call it kaf in Arabic. We will read each and every letter. Okay, we'll start. This is also kalab, but this is qaf, this is kaf. Sir, I know. That One second. means a dog. Okay. Now look here. A single letter change and the whole meaning is changed. If you have to pronunciate qaf, it is qaf, qaf, qaf. It is qalab. But if you see kaf, it doesn't have that throat thing. Okay, it is softer. It is kalab, and just single letter, it becomes from heart to dog. So when there is, say, for example, you are reading the heart of the prophet, but if you read it kalab, it means the dog of the prophet. So it changes the whole meaning. Now ponder about, it's a very serious thing. Ponder about the famous, thirsty camel example. If you see this word here, look at the word, pay attention. Everybody pay attention. Forget about everything and pay attention and see how important this Tajweed class is. Now you see Ra, Ha, Ya, and Mim. It is Rahim, Ha. Okay, but if you don't read it Ha, which is the correct form, okay, middle of the throat is a halaqi harf. So you have to read it from the halaq, that to middle throat. We will understand these each and every letter later. So it is to be read as like ha. But if you say it like this ha, the goal ha, okay, it will change the whole meaning. Because when you say Rahim, it means the most merciful. When you say Allah Ta'ala is Rahim, it means most merciful. But if you say not Rahim, you say Rahim. जैसे सारे लोग बोलते हैं Rahim, उसका मतलब है thirsty camel. Na'uzubillah min az-zalik. Now, do you understand how bad it gets? Look into my eyes. If you just pronounce a single letter wrongly, जो कि सारे लोग करते हैं कश्मीर के अंदर खासकर, that it was Rahim, but you are reading as Rahim. So you are not saying Allah Ta'ala is merciful. Na'uzubillah, na'uzubillah. You are saying Allah Ta'ala is a thirsty camel. Na'uzubillah. How bad is this? Astaghfirullah.
So that is why this Tajweed class is very, very important, because you understood that even a single letter changes the whole meaning. So that's why meaning is damaged, respect is lost. Read this, Zan. Meaning is damaged. Meaning is damaged, respect is lost. Tajweed protects the meaning, beauty, and the Sanctity of sanctity of Allah's word. word. So Tajweed not only protects the meaning, it makes it beautiful, and it protects the sanctity of Allah's word. So that is why we say Tajweed. Sanctity means जो pure कोई होता है ना, purity and all, जो कि मुतबरक हो, मुतबरक को बोलते हैं sanctity. ठीक है? What is the second thing? Second thing, we already know it. Yeah, you guys know it, this thing, right? Okay. Let me ask someone. Baba Hamza has raised the hand. Let him say it. Say this Tajweed helps us to recite. Second. Yes. Yes, sir. Read it. Tajweed helps to recite slowly and beautifully. Allah teaches us. Warattilil Qur'ana tartila. Recite the Quran. Recite Quran in a measured and beautiful way. So Tajweed teaches us to recite Calmly, just like writing neatly instead of scribbling. So you don't have to like scribbling, you're not scribbling, you're writing neatly. The Quran, you have to read it beautifully. That's what Tajweed means. And this is the Allah subhanahu wa ta'ala in Quran saying, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Warattilil Qur'ana tartila. Recite the Quran in measured and beautiful ways. Okay. Yes. Now, Kaifa, read this third point. Yes, sir. Tajweed shows respect to the words of Allah. When we recite carefully, we show love for the Quran. Our hearts feel closer to Allah. Our prayers become stronger. We feel peace inside. Very good. Now we come to the party now. That is we see the components of our Tajweed, and our book will be divided into these components. So there are actually 4 foundational bricks or components of the Tajweed. How many? 4. 4. Everybody. So write it on a copy 4. Write on copy Tajweed and write 4 on it. So that means we are trying to say that Tajweed is divided into 4 components. So write Tajweed like this, Tajweed, and write 4 on the top. So that, what does it mean? We are saying the Tajweed is divided into 4. divided into 4 components. Break. Okay, 4. you can say 4 components. Okay, so what is the first component? Write the first, write it on the copy. The first one. You write only the name, nothing else. Makharij. Yes, write the first. That's called Makharij. Makharij. Rij. और you write Makharij al-Haruf, यानी कि हरफ की जमा है, यानी कि लेटर्स को हम हरफ बोलते हैं ना, जैसे ABCD हो गया, आपके वो लेटर्स हैं, हरफ है, तो अरबिक में हरफ बोलते हैं ना, तो इसी को हरूफ प्लूरल लेटर्स. मखारिज अल हरूफ का मतलब है जो लेटर्स हैं उनका क्या मखरज है. नाउ व्हाट इज मखरज? राइट द मखरज लाइक दिस, MAKHARIJ on the copy, and then write articulation points of letters, or in other words it means places where sound come from. So यानी कि आपका sound किधर से आ रहा है. Okay, so every Arabic letter has a home, a place it comes out from. जैसे everybody look here, आपको देखना है कि कहाँ पे जो है साउंड रुक रहा है लास्ट में. तो आपको ट्रिक ये है कि आपको अगर मखरज किसी का देखना है तो योर ट्रिक इज दिस थिंग, दैट से फॉर एग्जांपल आपको देखना है बा का, सो पुट ऑन द बा सुकून एंड पुट द अलिफ देयर. सो व्हाट इज दिस? अब. Read and stop on the ba. Stop it on the ba. Stop it on the ba. Sir, it's ab. Leave it. So stop on the ba. It will be little bit echo. Don't worry about the echo and all. I'm not saying that about the echo.
Just say ab and stop there with the ba. Ab. So where did you stop? Tell me the. Ab. I will ask Adyan. Where did you Yes, sir. stop? Where did you stop? Which body part you stop when you say ab? Where sound stop it? In your tongue, in your lips, in your throat. Where did it stop? Lips. Lips. So that is the makharij. That is what makharij is. That is the place where sound comes from. This is what is articulation point means. So the ba comes from the lips. We will see that no one letter each. Every day we'll see the one letter and understand its makharaj and all. So similarly, for example, we say I alif and ha. Alif and we combine, we put a ha skoon and alif fatah. We'll see this later. What is skoon? What is fatah? I'm just telling you right now to have a shortcut understanding of where the makhraj is. Now I ask Zuhar. Zuhar, can you open up the mic? Read this now. Zuhar, read this. Aleem, can you read this? Fatima, can you read this? फातिमा बहुत है Raise किया ना hand फिलहाल. अरे इनमें से कोई नहीं बोल रहा. Abu Hanzala, can you read this? Sir, can I read? Abu Hanzala. Sir, Only Abu places Hanzala now. where sounds come from. नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ. नहीं मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पे मैं लिखा ना मैंने कुछ वो मैंने actually rub किया. I wrote it like this: alif and ha, and I put skoon on the ha, fatah on the alif. So what is it? Read it, Abu Hanzala. Abu Hanzala किधर गया? आह. So कहाँ आपको क्या lips close हो रहे हैं अब की तरह? अभी अब था ना? तो अब कैसे पड़ा? अब तो lips close हो गए ना? अब यहाँ देखो मेरी तरफ. Can you see me? Can you see me on my screen? Can you Yes, see? sir. Yes, sir. Look at me. Yes, sir. Yes, sir. 1 second. The screen is black. screen is black. no sir. Can you see me? Sir. Black Yes की sir. तो No है. sir. Yes, No, sir. sir. Yes sir. We can sir. see अरे you, क्या but नॉनसेंस the बोलते screen हो? is black. No, Yes sir. sir. This black. Screen We is black. cannot see इसको the स्क्रीन ब्लीक हो रहा है ना? Stop. Okay, इसको स्क्रीन ब्लॉक. अच्छा ठीक है. Let me stop sharing. black. Now can you guys see me? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. One Yes, second. sir. Now look here. Yes, Look here. sir. Look here. Now look at my face and don't Yes. say yes sir, no sir. Be quiet. Now look here. When I say ab, so it's getting in my lips. Oh. So that means ba has a articulation point. Articulation point. Say with me. Articulation point. Point. Articulation point. In the lips. In Articulation the lips. Point. Articulation. Articulation point. Now look here. Listen quietly. Point. Now I say ha. Ah, ah, ah. तो मेरे जो मुंह है ना वो खुल रहा है और यहाँ से आवाज आ रही है. हल्क से आवाज आ रही है. हल्क. हल्क मीन्स थ्रोट. हल्क मीन्स थ्रोट. So when I say ah, यहाँ से आवाज आ गई. तो हा जो है उसका आर्टिकुलेशन पॉइंट थ्रोट में है. सीधी सी बात है. If I say like this, at, तो मुझे कुछ ऐसे हो रहा है ना कुछ. तो यानी कि मेरा पैलेट और मेरी टंग काम कर रही है कुछ. तो वहां से आवाज आ रही है. तो अब हम सीखेंगे बाद में किसकी कहां से आवाज आ रही है. बट यू अंडरस्टैंड कि हर एक लेटर जो है ईच एंड एवरी लेटर हरूफ जो है उनके अपनी अपनी आवाज होती है. आर्टिकुलेशन पॉइंट होता है. क्या होता है? आर्टिकुलेशन point. और उस आर्टिकुलेशन पॉइंट को हम बोलते हैं मखारिज. क्या बोलते हैं? सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहली बात जो सीखी, जो पहला पार्ट है आपकी तजवीद का, फातिमा, जोहरा एंड अलीम, जो पहला पार्ट है वो क्या है मेरी जान? फातिमा, जोहरा एंड अलीम मखारिज. 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 मखारिज का मतलब क्या है?
Articulation point. Articulation point. आदियान एंड रिदान क्या हो रहा है? जितना तू पिंक रोज रोज हो रहा है तू पिंक, और रोज रोज तू नॉटी बन रहा है. सो आर्टिकुलेशन पॉइंट, आर्टिकुलेशन का पॉइंट क्या होता है बच्चा? कि किधर से आवाज निकले. इसको मखारिज बोलेंगे. वेरी गुड जैन. जैन said only that is origin of voice. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So like for example we say that is the places where sound comes from. This means the where from the sound comes. It's called articulation point, and this is the first part of the tajweed called makharij or makharij al-haruf. Makharij al-haruf means ये किसका मखरज हम पढ़ रहे हैं भाई? किसका मखरज पढ़ रहे हैं आदियान? Makharij al haruf. ये किसका मखरज पढ़ रहे हैं? तेरी नोज का. तो हम अगर तेरी नोज का पढ़ते हैं तो बोलते हैं मखारिज अल नोज, लेकिन हम पढ़ रहे हैं किसका? हरूफ का. तो मुझे बताएगा अबू हंसला का भाई उसामा बोलेगा मुझे हरूफ क्या होता है? लेटर्स. हरूफ होता है लेटर्स, प्लूरल ऑफ हर्फ. हर्फ हो गया लेटर, हरूफ हो गया लेटर्स. तो जैसे खौ है, हा है, कौफ है, बा है, हर एक के अपने अपने आर्टिकुलेशन पॉइंट हैं जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. ओके. सो आप ऐसे याद रखें कि हर एक लेटर का अपना अपना होम है. एवरी लेटर हैज इट्स होम एंड यू हैव टू रीड इट फ्रॉम इट्स होम. और दूसरा बंदा जब आता है, जो दूसरी कितने पार्ट्स मैंने बोले? हाउ मेनी पार्ट्स आई सेड ऑफ तजवीद? Four parts. Very good. Say 4 parts. Everybody. पहला पार्ट कौन है? पहला पार्ट कौन है? फर्स्ट पार्ट. Is it Makharij al-Nozi? Is it Makharij al-Nozi or Makharij al-Haruf? Very good. कौन से हरूफ? अलिबाता या कि एबीसी? इसलिए इसका मतलब हो गया, देखो बच्चा, इसका मतलब हो गया जो पहली पार्ट ऑफ द बुक हमारी होगी उसमें हम मखारिज को पकड़ेंगे और एक एक लेटर का हम उसका घर देखेंगे. अलिफ बे पे. अलिफ बे नहीं बोलते, वो हो गया उर्दू. अच्छा, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, मैं आपको वो बाद में सिखाऊंगा. मुझे ये बताएं कि मैंने मखारिज क्या बोला शॉर्टकट में बच्चों के लिए? उनके घर, होम ऑफ द एवरी लेटर. What does it mean? It means the makharij Every letter अब मैं has a पूछूंगा, home. अब मैं पूछ रहा हूँ किसी से, मैं पूछ रहा हूँ किसी से. अब मेरे को यहाँ कैमरा में यहाँ पे आ रहे हैं ना इतने. हामना एंड अदीला, हामना एंड अदीला, मखारिज को जो मैंने कहा मखारिज अल हरूफ, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं उनको? Articulation of letters. आर्टिकुलेशन पॉइंट्स. वेरी गुड, माशाअल्लाह. आर्टिकुलेशन पॉइंट्स. तो पहला जो हमारी कंटिन्यूटी होगी ना वो उसी की होगी. Now the second one is sifaat. Second one is what? कॉपी पे लिखो. ये बातें कौन कर रहा है? Who is talking? Characteristic. नहीं करेक्ट. ये बात कौन कर रहा है? बातें नहीं. कॉपी पे लिखो कि दूसरा पॉइंट है सिफात. दूसरा पॉइंट क्या है? सिफात मीन्स क्वालिटी ऑफ लेटर्स. और ये सिफात किसका है? Quality of letters. एक मिनट क्वाइट चुप करेंगे सब. एक मिनट, ये कौन बातें कर रहा है? Who is talking? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? सब चुप करेंगे एक मिनट. लेट मी सी हु इज टॉकिंग. तो 2 चीजें मैंने कही. पहले मैंने क्या कहा? मखारिज अल हरूफ. सेकंड, व्हाट इज सेकंड? सिफात अल हरूफ. सिफात अल हरूफ. So सिफात अल हरूफ का मतलब क्या? Everybody mute now. Everybody mute.
Everybody mute and listen only. Quality of Quran. Everybody Quality mute. of letters. I said no mute. You don't understand? So we said first thing is the Makharij al-Huruf. Second thing is sifaat al-Huruf. Makharij al-Huruf में क्या बताया मैंने कि वो भाई साहब होता है कि आर्टिकुलेशन पॉइंट, साउंड कहाँ से निकला, हर एक लेटर का अपना होम होता है। तो और सिफात का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स, यानी कि सिफात डिस्क्राइब्स हाउ अ लेटर साउंड्स वंस इट लीव्स इट्स मखरज। अब मखरज जो है वो निकला, मखरज जो है वो हमने किया, साउंड निकाला, लेकिन अब कुछ उसमें चीजें हैं कि कभी ये स्ट्रांग होता है, फॉर एग्जाम्पल कभी स्ट्रांग होता है, जैसे रॉ, ऐसे पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे। इसको रा भी पढ़ सकते हैं। देखो दोनों सूरतों में रा और रॉ दोनों को जो है मखरज तो निकला जहां से निकलना था, लेकिन बयान बासित बिहेव योरसेल्फ, लेकिन अब सिफात कि मोटा पढ़ना है कि पतला पढ़ना है। ठीक है, बात समझ आई? और इसी तरीके से क्या सॉफ्ट मत पढ़ना है, इसको कहीं इको तो नहीं निकालना है, इको तो नहीं निकालना है इसको। जैसे हमने कल कला जो हमने जो बच्चों को पता है जो हम पढ़ते थे, या कहीं स्ट्रेच तो नहीं करना है, या सिफात जो है ना इट गिव्स ब्यूटी टू योर वॉइस। तो ये दूसरी बात है जिसमें हमने एक तो हमने पढ़ा मखरज, ये गोल्डन रूल है, अगर मखरज है और आपने सिफात निकाले तो मखरज और सिफात से वो डिफरेंट लेटर ही बन जाएगा। मखरज और सिफात से क्या बनेगा? डिफरेंट लेटर बन जाएगा। जैसे हमने हा पढ़ा, देखो हमने हा पढ़ा और हा पढ़ा, अभी हमने देखा था, यहां देखें आप, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, लुक इनटू माय आईज। हमने बोला कि भैया हा, वो हमने थ्रोट से निकाला, हा वो भी थ्रोट से निकाला, तो मखरज दोनों का तो थ्रोट ही है ना, दोनों का। आपने कैपिटल हा और आपने गोल हा दोनों को थ्रोट से ही निकाला, तो दोनों का मखरज क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ। Throat. दोनों का मखरज, Same. दोनों का मखरज थ्रोट है। थ्रोट को हम हल्क बोलते हैं, हल्क, हल्क है। लेकिन जो बड़ा हा है उसको हम हा पढ़ते हैं, और जो गोल वाला हा है उसको हम हा पढ़ते हैं। तो किसकी फर्क आ गई? Yes, मखरज की फर्क sir. आ गई या सिफत की फर्क आ गई? Makharaj. मखरज। Makharaj. अरे क्या बोल रहे हैं Makharaj. यार, आप लोगों को तो समझ ही नहीं आया फिर। Sifat. नहीं नहीं, गोटा Sifat. नहीं नहीं नहीं, डोंट mug it up. You are doing the mug up and saying it. Don't say like that. Look, listen to me. Listen to me. Let me put the spotlight, and we have a little time left. Let me put a spotlight. Spotlight कहाँ पे थी ना यार, कहीं पे, कहाँ गया वो? Enter spotlight for everyone. Okay, देखिए मेरी तरफ देखिए आप। मखरज हो गया, जो दो चीजें होने की, मखरज एंड सिफात। मखरज हो गया कि साउंड कहाँ से आ रहा है भाई साहब, साउंड। और जो सिफात हो गया, सिफात का मतलब होता है कि भैया कैसा है। ठीक है, जैसे हम एडजेक्टिव नहीं बोलते, इंग्लिश में हम एडजेक्टिव सिफत को बोलते हैं कि भैया कैसा है। sir. हम जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले, आप सुनो सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देन ये मीटिंग खत्म होने वाली है। जैसे मैं कहूंगा कि अरीका, अरीका इसका नाम पड़ गया, लेकिन अब मैं बोलूंगा अरीका इज अ गुड गर्ल, तो अब गुड से पता चला कि ये लड़की कैसी है, इसकी सिफत क्या है। वैसे ही मैंने कहा हा और मैंने कहा हा, गोल हा और हा दोनों हल्क से निकल रहे हैं, तो हल्क से जब दोनों की वॉइस निकल रही है तो आर्टिकुलेशन पॉइंट दोनों का हल्क है, दोनों का आर्टिकुलेशन पॉइंट हल्क है, तो दोनों का आर्टिकुलेशन पॉइंट सेम है। लेकिन एक को मुझे हा पढ़ना है और दूसरे का हा पढ़ना है, तो चेंज किस में आ गई? सिफत में ना। सो कैरेक्टरिस्टिक में Yes, चेंज, sir. सो हमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ गई। तो मखरज खाली